कनाडा में मुकीम सिख कम्युनिटी के लीडर भारत पर बरस पड़े। कहा, अकलियतों पर बदतरीन मजालिम किए जा रहे हैं। खुद को सेकुलर कहने वालों के दावे धरे के धरे रह गए। टोरंटो में हमारे नुमाइंदे दाऊद जान से गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। So when it comes to India, उत्थे गांव गायें हैं जड़ी खाओ, वो रिस्पेक्ट ज्यादा। काओं को मारो, गाय को मारोगे तो सजा होएगी। सिख को मारोगे तो कोई सजा नहीं है। क्रिश्चियन को मारोगे तो कोई सजा नहीं है। मुसलमान को मारोगे तो कोई सजा नहीं है। इस करके ये जो घट गिनती अकलीयतां उन्हां दी रिस्पैक्ट आ जिहड़ी ये दुनिया दा चार्टर कर रहा। भारत इज येट टू मीट दैट गाइडलाइन। देयर इज नो साइन दैट भारत विल बी डूइंग दैट इन नियर फ्यूचर with the terrorist government now in place. I don't think that is going to happen. अमलां दे होणगे नबेड़े, किसे ने तेरी जात पुछनी। ये तो है कि इमरान खान नूं की लोड़ सी इस लांघे दी। He was a government, he is a prime minister now, ਅਤੇ बहुत घालना घाल के बनया। If he did that, that means he respects the minorities. And India is yet to respect minorities. 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲ ਜੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟ ਪਨਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। Where is minorities? Where are the rights of minorities? They have to practice it, not just say it. I can say anything I want. I am a Canadian and I observe these things. Well, I don't want to call that drama because I believe in things do happen in their own due course. But when politicians make it happen, that means they feel that. That means they respect that. This is what happened. 34 years of people going in and out in courts, and many courts exonerated him. All of a sudden now one court said, no, we cannot exonerate him. No. I mean, there's always some good judges around. But the point is, 30,000 ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ 30,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਰ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਵਾਇਆ ਉਹ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮੁਨਸਿਫ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, क्या मेरे हक में फैसला देगा?